Let's go, boys. Let's see what happens. No commentary or what? No casting. Well, after finally what seems like an eternity of waiting, it seems that we will be going live with Entity versus Bren Esports finally. Entity will be starting on the CT side and Bren on the T side, and I know you guys have been waiting for this very match. You've been waiting for this very moment. We're sorry to keep you waiting, but you will see all the best action go live right now. All the Indians in the chat, make some noise as Entity Gaming go up against Bren Esports. The team from Philippines is having a great round so far. They managed to go all the way into its Ivy and somehow bamboozle Entity to reach the B side, but all their problems haven't ended yet as the fielding is still strong over here. They're trapped near the connectors that blocks close enough to do quite a lot of damage, but not quite enough as they only get Amaterasu, and Entity are able to bring the round back in their favor pretty easily. Exactly, Fritz. And considering that it is train, starting off on the CT side really good is a really important aspect to it, because it allows you to get much more utility. And considering how the Krieg meta, like I said, has changed the way that we approach fundamentally and has changed how map balance works in general. On the T side, now you generally expect to get at least 7 rounds. But a good start from Entity. The personal round secured under their belt, and now is the time where they need to come clean with their anti-eco side. Push up close and personal in through Pop Dog. And you can see Burn slowly converging upon the east side. They're just trying to wrap around, see if they can get any openings, poking all around the defense here. Burn not finding any success whatsoever. Again, they're only on via pistols. Cholu tries to jump, tries to get a little bit of information, but gets tagged on. Return side, regressed with this UMP, able to find a kill. Puppy. He probably might even just find the C4 as well over there, if he's careful enough about Papi Chulo, who takes his sweet time. Oh my probably God. took a second there to process what was going on and then execute Sai. Well, either way, Sai must have spotted out the C4 and relayed the information to his team. So at this point, Entity do know what Bren Esports are up to. The ball is in their court. Yeah. Well, UMP picked up. Burn. The goal here is to do damage, and will Entity give that opening as a question? The only opening I can see thus far is Deathmaker's aggression into Pop Dog, and again, it would be hard to punish considering how on point Deathmaker has been for the past few months. Oof. Oh my goodness, Poppy! Talk about on point, precise with the deagle. One shot is all he needs, but well, goes down to a shot from skill. And Deathmaker, consistent as ever, gets all 3 kills in through yard. And that's gonna be a second round on the board, net for NCG Gaming, without losing all. क्या 2 रुपए की कास्टिंग है भाई? इतना महंगा इवेंट हो रहा है भाई. कम से कम थोड़ा ढंग की तो कास्टिंग करो. 1 Deeks. But in the end, Entity do manage to bring it back in their favor. Not losing too many players. They still have most of their infos up. Excalibur, though, he picks up an SMG, so he's gonna be looking forward to get up close and personal. Well, the Kriegs are out like we discussed, and now let's see if they can go on with Carnage. Deathmaker, initial monster will push back to terrorists, and they have control in through Pop Dog. Will in good use, but the question Amaterasu spray way too wild, will connect a little bit, but at the end, it's exchange of HP going either way. They're going aggressive in through T-Con and Direct. Not Flash side. Will he be ready for the ensuing fight? The question with gets the double, and now the hold in through Pop Dog has been a success. NC Gaming laundering on their aggression, and now a 2-man defense into its A, leaving Excalibur all alone into its B, and Burn. They have all the map control to go anywhere they desire. Ivy control theirs, T-Connector control theirs, Pop Dog control theirs. Regardless what you name, Entity are on the back end of it. Their defense will hold strong with questions side, and it short onto the player playing Ivy, and that will funnel the player into T-Connector. He sneaked all the way into it off, and he might just be able to get the second one. Luckily, Side trades him out just in time, and he swings wide for the last kill as well. Entity, this time they take quite a lot of damage, but they managed to win the round regardless. That is gonna be a
clean board for Entity. At least for now, they look really on point. Burn, even with the full buy, not able to converge one upon it. They will have to go for Nico now, but the buy is coming right around the horizon. They will have an investment coming in the next round. A bomb plan would sweep things up, perhaps even get an early op on the playing field, which is really important on the train. The T-side op allows you for so many pickings, which completely denies the aggressive off angles that Entity can take. Ooh, Excali missing a nade early on, and doesn't do any team damage whatsoever, but Burn are playing very patient here. They want to try getting pick off. The problem is Entity don't budge. They're not giving away any. डीएम ही निकालेगा भाई ये मैच. शॉट शॉट पॉक शॉट. साय खेलता है भाई. कर रहा खेलेगा जिताएगा मैच भाई. वो पक्का जिताओ भाई. Something goes wrong, even Deathmaker can go around and help them out. I hope they don't plan to push on through the smoke. Probably might use a flash. Excali got to be careful over here. He has an inkling. He knows that these guys might be coming, and he pushes through it. Molotov to hold them back in place at least for now, but they are holding them down with the M4s without any problems whatsoever. 7 HP HP remaining, but yeah, exactly. 7 HP. Nothing much you could have done in that situation. 4-0 nonetheless. Now is the time. मार रहे भाई. 4-0. MVP is out on wits, and one thing that really bothers me here is Crips. Burn has 3 perm bans, which is Nuke, Vertigo, and Train. I'm not really sure if they took a gamble or maybe this is that one-off curveball that we've been expecting all day. But it does seem like Burn are on the top of the game, right? सिटी साइड मैप है ब्रो. अरे मुकेश किसकी तरफ से यार तू? मतलब मुकेश ना वही है, समझ गया मैं. तेरी तो फट रही थी थोड़ी देर पहले कि ब्रेन ऐसी टीम है वैसी टीम है. All the best. अच्छा ये फाइनल वाले दिन लगाएंगे भाई बढ़िया सा स्टेज वगैरह. अभी तो ऐसा ही भाई खट्टे पे बैठा के खिला रहे हैं. सही में भाई खट्टे पे बैठा के खिला रहे हैं भाई. क्या अजीब है ये. It is evident that they don't play this map. They try to avoid it entirely, and they always try to put it as the as the first ban. It's either Nuke or it's Train. So we've seen this in the past where teams try to switch things around, where they bring in the map that they're uncomfortable with for a tournament like this, perhaps for a big upset. But I think they might have overplayed their cards here. They're playing into the strengths of Entity rather than their own ninja secrets. Oh well, if that is the case, then Entity will be really, really happy. And they do seem to be happy given the significant lead they've already gotten. 4-0 is pretty damn good, and they have the op up already. Plus, more than that, Amaterasu and Deathmaker have not died a lot. Sai also hasn't died a lot. So the bank starts to build up on Entity Gaming, and if they manage to keep most of their players alive, their economy will show an upward trend. Meanwhile, Burn, they keep on digging into a downward spiral, and that's going to be difficult to get out of after a point. So it seems like the technical pauses have been taken away. We should be going live in the game anytime soon. Quite a lot of technical pauses today, honestly, and a lot of delays as well. We would like to take this opportunity to really thank our viewers for sticking around and being patient. I know that you guys have been waiting for a long time, and let me just put it this way, the wait is gonna be worth it. Well, I really hope that we do not have another scene 2 at our hand. Seeing a besting is not good from both ends, and right now, seems like we're heading in that general vicinity, but Bird will have a lot of room to prove us wrong. They already have a lot of room on the A side as well.
2 out of the 3 entrances are already under control. Entity don't have cover of the short ladder area, which could be a problem. As soon as they decide to burst out, Excali is gonna have to look 2 ways. Hopefully Amaterasu and Deathmaker can hold on to its teammate on their own, so Excali can focus all his attention towards Pop Dog. If that doesn't happen, Amaterasu, he's gonna be in trouble because his position's already been revealed. The Molotov does give out a sound cue, and Papi Chulo's already ready, aiming in his corner. Oh no, even Skills falls. This is a problem. Entity Gaming, this is exactly what I feared. They did not have enough information as to when Bren have reached all 4 sides, and then when they finally crunch upon the bomb site, Entity are caught off guard. The crossfires are not in place. The fuck, man? And it looks like Bren finally will be able to get their first round on board. Exactly. Entity being put in a box, they didn't really like it. They tried to budge, but the Molotov really set fire on the B side, on the A side, not leaving any survivors whatsoever except for Sai, and he should be able to save his AWP. A Burn not really eager on the hunt, and rightfully so. They need their economy right here, right now. They need to start building strong, and need to base it on momentum as well. If Entity are able to net the next round, we will be able to see that dominating streak continuing, else it's going to be Burn on the comeback train. And mind you, train was CT sided a few months prior, but now it's a little more balanced with the Krieg meta. Oh yeah. If Entity are able to get 8 rounds, it will be good. If 9 rounds, it will be a delight. But the more, the better, at least in this circumstances. Burn, get their first round on the board, putting up a challenge and showing us that they know the alleyways as well. Yeah, but all is not lost for Entity yet. They still have some money left. They can purchase M4s. And if they can turn up the aggression once again, like they did in the previous round when they sent in Deathmaker and Excali all the way down towards the team mid, then maybe something can happen. And maybe Entity can make it work. But they gotta be careful because GUYZ, he wants Entity to do exactly that. He wants Entity to make those aggressive pushes and so that he can catch them off guard. This time they won't be repeating the same mistake as round number 5, as they already sent Deathmaker into its Pop Dog. That's one avenue that they don't have to worry about anymore. Deathmaker is one of the finest aimers in the country, and this is one place that he can almost, you can say that he's guaranteed to hold it down on his own. Exactly. T-Connector, Pop Dog, these are just standard Deathmaker position. And again, I hope it doesn't become a recurring tendency that Burn can read into Entity Gaming. At least for now, they're going in for that default hold towards either side. Aggressive is the way to go, at least in Deathmaker's terms, with the rest of his team playing passive and trying to support him in his aggression. And that's something that they are trying to do best for, but Deathmaker over-aggresses. Pro catches them off guard. They knew exactly what was happening and they were waiting for it. 50 seconds left on the clock, and now they're boiling down the hit into its A. Kills. The UMP at that range really won't be that good, and he needs to consider another angle. He can be sidelined from Pop Dog, has a man in through IB, so the backlines is something that he doesn't need to worry about. Next Cali close line in through holes. Dura gets that kill, and that's the opening that they were vying for. Sai gonna be on the late rotate, and now the rotate into his B comes in, but 2 men versus 5 on the hit. It really doesn't look for Entity now. It really doesn't look good for Entity now, does it? Oh no, it doesn't. But maybe Amaterasu being sneaky towards oil can get something done. Sai, he's doing all the damage, but he's getting shot from above. Amaterasu needs to trade it out, and he does. Meanwhile, Skills has managed to dispatch one of the other players, and wait, this might just be a mistake. He gets caught off guard. Amaterasu punishes him. 1v1. This is exactly what Amaterasu wanted, to put his teammate in an advantageous situation. He has a diffuse kit, but the scope on the SG just a bit too strong. Exactly. Affirmative, bro. Affirmative. This is why so many pros crying about it. Entity. Let's go Entity. To be honest about it, it really brings a fresh image to Indian CS. Not considerable. 4 round जीते भाई. Sai rush कर गया भाई. मर गया rush करके. Let's see अब क्या होता है. मेरा Discord सर्वर किधर है? Guys, किसी को खेल लौंडे? क्या खेलूं भाई? देख रहा हूँ मैं. Guys, किसी को बात करना हो? मैं बैठा हूँ Discord में. आ जाओ पट से. Invite कैसे करते हैं friends Discord में? Never. Generate new link. Copy. हेलो. ये पीछे क्या चल रहा है? ऑटो चल रहा है पीछे. कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेरे को. अच्छा. कंस्ट्रक्शन चल रहा है. अच्छा. लॉल भाई एमी भाई नहीं रे.
देख मार रहे हैं, देख मार रहे हैं, अपने भाई को मार रहे हैं। देख रहा है एंटिटी हारेगी नहीं, लेकिन देखना थोड़ा बहुत टक्कर होगा, देखना। परमिशन क्यों काट दी भाई तूने? मैं तो क्या परमिशन काट दी भाई तूने, यहाँ पे मैं लिख क्यों नहीं सकता? भाई? भाई ओ भाई, माइक म्यूट कर भाई अपना। ओ भाई क्या चल रहा है पीछे ये? मैं भाई माइक म्यूट कर भाई। नहीं नहीं नहीं, जब कंस्ट्रक्शन मैं भाई माइक म्यूट कर भाई। नहीं नहीं तब आना भाई। वही तो, लेट्स सी यार अब क्या होता है। अब लेट्स सी गाइस, डिस्कॉर्ड लिंक इज अपडेटेड, कम जॉइन इन। Pro already taken down as he tries to make his way in out of the team mid. But Derek, he's managed to slip into a shot ladder. This could be a problem. They don't have aggressive positions over here this time, but they are playing all around the bomb train, which means that crossfires could be strong enough. But if Bren managed to close the distance and somehow get up close and personal by using some smokes or maybe creating a wall of them, then things could start to get interesting. But for now, Entity seem to have it under control. They have the man advantage. They're not going aggressive anymore. They are looking for information, but they're not making anything risky. So the ball once again, it's in Brent's court, and it seems that this time they want to hit it across Ivy. Ben did find success last time they tried to come up towards Ivy. They're hoping that they can pull it off once again. But if Amaterasu can get the kill onto Papi Chulo, then a lot of their options are limited. Borkham with a nice tap onto Skills, but he did get dinked down in the process, so I guess Skills did his job well enough. And Sai can finish up what he started. Deathmaker doesn't even need any help, as Amaterasu should be able to spray him down. WITZ now with just an op. He's going up close against Deathmaker, and this could be a problem. He does manage to land the quick blick, but he's gonna have to punch in the digits real soon. Entity Gaming are going to be swarming him from all directions, and they cannot afford to give him separate 1v1s. And they're doing so just that right now. Amaterasu peeks in all alone, and this time they need to be careful. Double peeks have to come in, and Excali gets picked off. WITZ, he might just be on the verge of clutching out this 1 versus 4. He's already done most of the damage. Sai, op versus op, and this time he pulls it off. WITZ with an amazing clutch. Entity Gaming could not have figured this out. This is got to be a heartbreak for Entity. They almost had that round within the grasp of their fingertips, but just slipped away. WITZ displaying absolutely flawless aim with this AWP. And Entity again on pistols. These kind of rounds are the rounds that lose you matches, and this just might be Entity's one to lose. Yep. But at least the Deagles start to sing. They do manage to get 1 kill, but that's all they're gonna get. You wanted IV aggression, OG, and there it is. They have the IV aggression. Skills with a nice Deagle onto Borkham's face. That should allow him to grab a weapon or two. Most of them are pretty low, but then they have done enough damage to Bren's economy, I would say. If they get 1 more kill, I think they should be happy with whatever Entity have accomplished in this eco round. And it does seem that they are keen on going in for this retake. Probably Deathmaker would save that AK if things don't go if things don't go well enough. But for now, it does seem that the retake is on the agenda. But they don't have a defuse kit though, nor any body armor, so they gotta be super careful with this one. Deathmaker up close to Bristol gets the initial headshot on a pro. Kills coming in from Oil Train, be able to supplement the push. Gets taken down immediately. Hope he has an on point so far, but Excali. And I think they have enough time for the defuse. Oh. Will be coming down to the wire. Oh god. Has he got it? Yeah. Ooh. That game is scarily close. Yeah. Cali pulling it back in the nick of time. 5-4. When Entity did lose a round in kind of a sad fashion, they pull it right back with the Eagle. Burn. This time around, they've got to be the one feeling the burn behind their backs, because they just lost a very crucial round which could have set themselves up for a massive deficit, and now they'll be on the receiving end of the deficit, as if they lose this round, things won't be looking all that great on the T side of the train. I need to point out, both the teams are at a very the best knife. fragile state right now. None of them have a good enough loss bonus. At this point, if things go wrong, all of the half could come crumbling down. And it seems like Bren want to crumble upon this A site. They're
going in with so much fury. Papichudo's already towards Epox, and I don't think anybody knows this. Amaterasu finally makes contact. He's gonna pick off Pro, but he needs backup, and he needs a lot of it. Skills trying to play around the smoke won't be successful as WITZ finally finds him. But Amaterasu's still alive. He's still holding towards Sandwich, and as long as Excali's alive and he sets up a distraction, Amaterasu can move in from the back lines and maybe cause some problems. But he's been spotted, and that's gonna be the end of him. Sad life. Entity Gaming crumbling on the A side yet again. They try to go aggressive on the back of Frag. It does seem like Burner. Stream देखते हैं यार, ये तो boring है. Velocity, let's go. Tendency out of them and are catching them off at every position they try to go aggressive at. At this point, Entity Gaming, they might just be content sitting back and passive. Because Burn, they're just reading them like a book. And at this point, not a good book to read into. Oh, definitely not. It's an ugly story. Not with a good ending. Not with a good ending at all. Horrible ending, in fact. The author must have been cruel. Just like Pro was cruel enough, but oh, Jesus Christ, Sai! He goes huge once again! And this time, there's no stopping him. Excali wants to finish what he started, and this might just be one of the worst eco rounds that Bren have faced so far, except for the one they've lost. And Amaterasu has a great position. I do not think Bren will expect him to come in from T mid. Not so fast, not so soon. This might just be a backstab of Amaterasu. Lifetime, but never mind. Backside shot. Here's with the AWP scope and takes him out by the head. Dragon Lord शापित है वो. So, they want to keep this a little more fast paced. One of us more than enough for them. And see on the other end, they have another save with this, another op on his side. They have all the utility in the world to work with, and this time around. They will stack in towards yard. And mind you, they have Sai who's trying to pivot around the CD connector, but there's only so much LOGITECH can do. And it does seem like that initial few rounds did give Entity a little bit of confidence, but the latter, it just shut Entity down. Now look at them, they're at a completely passive stance. No control towards the connector, no control towards Pop Dog, not the Deathmaker that we all know and love. The initial Molotov will hold them at bay for a decent bit of time, but the utility damage is all that he will receive as Sai. He finds the equalizing prank on a wet 4 vs 4 as it's going to be primarily Steve's Stain on the B-bomb side. Luckily, Amaterasu comes in with a refrag though, but Borkum still keeping this one in contention. 2 vs 2. Sai, not a flick that he often missed, but the refrag, he'll not miss them. Puppy in a 1 vs 2. But with him having a Molotov, might just put this in his favor. Someone Molotov skills immediately cancels the scope, but no diffuse kit on him. It's actually Sai with the diffuse kit. So expecting him to come lower, but goes on the preemptive peak. Why is he looking into his upper set? That's no! Bobby completely capitalized kills, getting caught off guard in the worst possible position. When you're set up to watch towards lower, you're not supposed to watch towards upper, my friend. That turned out to be a disaster. Yeah, Bren already have 7 rounds on the T side. In a map which is supposed to be mostly C decided, so I guess Ben, they're gonna be pretty comfortable with whatever they've achieved in this half. Even if they lost those unexpected eco rounds to Entity, I don't think they're gonna be too sad given the progress they've made so far. Entity though, they really need to step it up. The Eagles did deliver for them last time, but they need to make them sing once again. And this time, let's see how much damage they actually manage to do. They're juggling around the middle train, hoping that they can find at least someone off guard. But the crossfire towards T mid has way too many guns pointed in their direction. But be wary as to not walk into these guns. Mind you, just on the back of one of these rounds that we didn't get Saratsu, initial MC taken, refrag upon refrag, and Swoop Pro comes in through SL. Pins are both Deathmaker and skills, and that's an 8th round on the board for Burn, Entity Gaming. They have another buy coming in, but this better work, because this is what's going to decide a good CD half from a bare minimum rounds achieved, because 8 to 7, that's borderline decent. And considering that, like you said, it's a CD-sided map, but the Creek meta has changed things around, I don't think it changed it so drastically as well. Oh, Entity, just being on the receiving end of a spanking, and they're not able to give it back in return. This time around, what they will be able to give back is another op. He'll just pick one of his own, a double op setup on the CD side of Crane. Not really sure if this desperation or maybe a pocket strat that Entity have come up with. They have one towards SL, they have one towards Ivy and one primed in towards uppers.
Initial entry taken. Pro is down. Mind you, Pro did take one through the grave as Deathmaker falls in through Ivy, through Pop Dog. Even exchange as they lose an important man for a really important man. CT now, sided map पे मार रहे That's the thing that they want to commit Let's into see, it. भाई, ये B. मुश्किल लग रहा है मुझे तो. Sadly, Sai will be a little late on the rotate. Excali has to hold for as long as he can, and he has a Molotov to do so. The last time around, he wasn't able to go down with a single frag to his name, and it will be the same story, rinse and repeat. 3 versus 5, 3 versus 4. And look at this, NTT Gaming level already called quits. They know that the double up setup is something far too valuable for this round, and they know that they have a better chance of winning it the next time around. If they are saving all 3 guns, they might be able to drop 2 more with the players who are dropped weapons can go utility. So there's still a hope, but it's fleeting. Entity started off the half so well, but goal line suggests otherwise. The B aggression works out perfectly for Bren. I mean, the fact that they were able to get to the A side pretty easily did not surprise me, given that they have been getting control of Pop Dog quite often, and they have been getting picks over there as well. When they have control of Pop Dog and then getting out of team mid, if they do both at the same time, it becomes pretty easy for them. But then the B side is considerably easier to defend, at least with CTs. This time though, Excali was caught all alone, and he couldn't even do much because he got double peeked. You couldn't have expected much more from him. He actually did manage to dink one of his enemies, but that's about it. Maybe something Excali should consider to play a little more passive in towards B. You know that they're going to go aggressive. That's the tendency that you have in towards the B side, that he's going aggressive, playing in through oil, maybe playing from the back lines, playing through stoppers, and maybe you get a pick off, play passive 4 versus 5 with the retake cavalry can come in, or at least hold the ground. Because right now, Excali, all he's doing is a bit of utility damage and going down with spawns, and Burn are completely capitalizing upon that one player. Sai coming really close to that wallbang in through SL there. And again, Entity Gaming passive in through both yard and the open side, which at the end of the day, you won't net frags until the frags come to you, and when they come to you, Burn, they have no mercy whatsoever. Oh Jesus, Sai has no mercy. Papichulu gets instantly deleted, and Sai's feeling a bit too adventurous over here. Getting up close and personal with that orb, playing near the blue train. There's Borkum also waiting around the corner, but now he needs to look in 2 directions because they're about to pop out of Ivy. And Skills, he's been smoked off. He's gonna be cut off from the action, so Sai needs to be the one who steps in here. Sai hagna mat. Skills has taken more of a passive stance. Double op hai, hagna mat does not allow him to get into action once again, and another one has been thrown now. This probably might indicate to Skills that there's gonna be 2 people towards Ivy, whereas in truth, there's only Wits over here. ये लोग ये rotate करेंगे, आराम से वो भी execute करेंगे. Let's see. And this could be problematic. Short. Unless, of course, Sai can hold this area down like a turret. He spotted out one more player. That should be information relayed to his team, and they can focus towards SL. Then knowing there will be one more person coming in there. But Wits, he's too quick with the op. He's getting everyone, demolishing them all. And in a flurry of seconds, Bren Esports come out of nowhere, ambush Entity Gaming, and get all those kills. Entity Gaming had such a good start going into this map, leading 4-0. And at one point, when we thought Entity Gaming have it in the bag, that's when Bren Esports, they turn up the pace, and they turn out to be on top. 10-5, and I doubt many people expected this, given the start that Entity did have. But now what's going to be important is their start on the T side. Bren, they came out with a response. We initially told that they don't play train as much, but it turned out to be a curveball. It ended up working in their favor. Entity got surprised for now, but T-side pistol, they still have a lot of room to cover, and if they do get the pistol round, they'll have a decent bit of momentum and money to do it with. The only thing is, will Bren give up any space? Because right now, Wits and Kapi have been looking on point, and Kapi's aggressive play has really been catching Entity off guard, cementing the lead for Bren as well for now. Yeah, that turned out to be a reverse psychology hack. We did say that NT is pretty strong on train. We also did say that Bren Esports are not the kind of team who are comfortable on train most of the time, but then things seem to be completely the opposite over here as they are demolishing Entity, that too on the T side. What would you expect on the T side for Entity though? Do you think they will come out guns blazing in the pistol? What do you think, guys? Who will win?
What would you expect? So initially from Bren, we did see that 1.6 split in towards B, but Hmm. I doubt that Entity Gaming would even go that route. I'm My not. guess is they might just head a fake in towards B, drop down SL quick, and maybe a quick hit towards A if they get the backstab. Probably that could be the case. The thing that I noticed about Bren Esports is whenever they attack the A side, they don't always use too much utility. A couple of flashbang, maybe one smoke towards Ivy or another one towards the center train. That's pretty much it. They hardly ever use those smokes towards the bomb train itself. They don't go for those execute heavy setups. They rely on a lot of contact plays, and so far contact plays have been working in the favor of Bren Esports. I'm not sure if Entity are gonna go for something similar, but I guess we will find out soon enough. Second half of the game, ladies and gentlemen, this is the game that you've all been waiting for, and Deathmaker, he gets there towards Pop Dog, already waiting for his enemies, waiting to put those bullets and tap them away. Man advantage secured for Bren, and now Entity Gaming, they gotta punch up once again together and make sure that these Glocks have great potential. Bren still have a decent bit of utility up. 2 smokes, a flash, and a nade. They're OP more than upper, content Wits. to play for the OP, bro. retake if needed. Entity already a man down. How do you approach this? They have no utility whatsoever. Skills already disposed of his. Has no armor to work with. Might just use him as a guinea pig here if needed. The refrag is going to be very important for Entity because they can't lose much, but they need to gain as much as they can. They have control in through Ivy, and they're trying to group up here. Excali and Skill's gonna push on through while Amaterasu comes to pretty connector. Perhaps Distraction's the name of the game? Didn't Derek see them over there? क्या I don't spam think चल so. रहा है भाई? The shoulder bait didn't really work out in his favor, but he's still holding the angle, but Skills actually comes up on top of the engagement. Even though he doesn't have armor, the aim punch jack to him. And now with Wits being up on Heaven, this might just be a sneaky play that Brenna coming in with. Oh, player rotation in through 1.6, and I think they've already spotted the player in through Heaven. This might be a huge issue. Cali going for the safest plan possible, but Borkam aggressing through Ivy catches him off, but not before he punches the final digit in. 2 versus 3. Kills, getting spotted off. Wits takes him off. 1 versus 3. It's only Amaterasu left, and he's playing in through SL, and I think they know it as well. Puppy is giving the call, and he's not aggressive through just yet. 36 seconds, and Amaterasu, he's going to be forced in the aggressive stance. Tap comes in. Borkam looks exactly where he's playing from. Tap it down. 11-5. Entity Gaming struggling to gain grounds here on train, except for the initial rounds that they were gifted. They've not gotten any, and it's kind of hard to see considering that this is a map that Entity Gaming really do love. I love the approach that Bren Esports are taking over here. They go so passive that Entity Gaming have never any chance of winning those engagements straight up. And whenever they peek, they make sure that there's at least 2 guns staring at one player at the same time. The trade frags are always in their favor. I love the way how Amaterasu was just being toyed around with. I don't remember who it was to a shot ladder, but he was just climbing up and down the ladder, keeping him busy over there. Jesus, Amaterasu with the AK trying to get the spray onto Pro, but he just cannot simply do so. And once again, it's going to be time for Borkim to step up. So Entity Gaming, they're all headed up towards him. Deagles, Galils, and AKs, the entire cavalry, all headed towards the B side, and he might just have spotted a few of them, but he hasn't called for the backup yet. This is good, because Entity Gaming need to capitalize on this, and now that Sai could have sneaked in towards the highway, he does not manage to rattle any shots off, but Derek is pretty low. Maybe a couple of flashes and smokes thrown in. They only have like 1 flash, 1 smoke, 1 Molotov. That's all they have on the Deathmaker. You gotta use it right now, and hope that this execute works out for them, because they don't have much else, to be honest. But Borkam has a pretty good off angle. I don't think they expect him to be in such a brutal position, especially not with Papi Chulo also present over there. It's gonna be an easy cleanup as well. 12-5, and we did mention that every team that did opt in second run full on the T side always won out, and Entity Gaming, the unfortunate circumstance of not being one of them, now really bites them in the back because they're already down 7 rounds, and it's just gonna Sad life Entity. Nice try. अगले साल try करना. and Chill, it's guys. just gonna be Burn continuing to dominate. At this rate, Entity might not even get a second round on the first round on the T side. They're gonna be on pistols, but
again, when you're not able to do much with the rifle, अबे अभी तो चालू किया है this might फ्लैश be a कहाँ way से to go आएंगे उनके because पास पैसे you नहीं है somewhat. So there's this one thing that I've कहाँ से been अपना ज्ञान trying लगाते to हैं भाई लिख understand रहा है with सुपर at least मारियो Asian CS भाई and तू जाके pistols. मारियो खेलना When it's with pistols, there is less doubt in your mind. You're less hesitant to take those, one-off plays. You're more likely to go in for them, and due to that, if you have a deagle long range, maybe a 50 tap gets you a lucky connection, it's easy to converge upon these rounds. And Bren, at least for now, they've been having a good job avoiding these one-off moves coming in from Deathmaker and Gang. And it's surprising not to see Deathmaker go off here. Normally one of the most volatile players in at least the country, kind of left for cold today. I think all of Entity is feeling pretty cold. Sai is the only one who has positive KDR. Everyone else is kind of struggling. Well, it seems like they will be putting all their eggs in this B bomb site, and the Molotov to its site could cause a lot of problems. They're gonna have to look for another planting spot. And Borkum assassinates Amaterasu as he tries to carry the C4 over to the other side of the train. This is problematic. Borkum could do so much over here, and he finally will deny the bomb plant as well. They can't even punch in the digits, and now Skills is left all alone in a 1 versus 5. Not for any longer as he bites the dust too. ही भाई Well, before they punch in the digits, क्या they कर get रहे हो punched Entity? into, and now 14-5 हो गया burn. They have the opportunity to close things out. Again, we really should not see a we saw अरे in elimination है क्या ये the game with MVP where they were able to come back from a deficit of 13 to 7. लैग हुआ क्या किसी का And स्ट्रीम that is if Burn play their cards right. Mind you, Entity do have a good chance of coming back into this one. They have a decent bit of utility. They have the creeks out. But they're able to win at least 3 gun rounds back to back. We're at an equalizer. इस Yes, बंदे को it's not with खेलना the चाहिए Johnson भाई, stars, पता है? but we take it round by round deserve by round. करता है If भाई। all these players do take it as it will be a task well divided and well conquered with. Next back on Amaterasu and Entity. Their aggression again comes to a grinding halt as they will take a different avenue. A rush down to SL, but it seems like Bren already at every corner they present themselves as will take the carry down on the entry. Doesn't that make a lucky do reply in time though, but Poppy, the spray comes in as Jack Poppy gets so killed both pro by the dust. Poppy It's only so good one. So now it's a little too wild. 1 HP versus 30. 1v1 One bullet either way will One finish the HP. job off. He knows that Nice. Sai takes him by the head. 13 to 6. Entity Gaming. They get Come their on, sixth Entity. round on the board. Let's There go. is some kind of redeeming quality. At least for now, they have an avenue back into the game. They've put Bren's economy to a halt and Come back होगा guys क्या momentum बोलते to a हो halt 5 as they watching can come back finally let's start go going on their own. I can't even imagine what kind of nerves Sai would have had Sai at in that the time when he chats? ran out of bullets. I mean, it's a pretty obvious Around choice to Deacon switch to your agar pistol and start pre-firing around around the your corner plan if you goes know the out. position of fuck? your enemy. But still, just sign the if one chat finds himself in a situation क्या like होगा that, अब people start इनका panicking. It's Sai good that he always was able to overconfident he keep calm said and ब्रेन collected से तो even in a जीतेंगे messy situation हारते like हैं that. हम उनसे Believe me, that स्क्रिप्ट्स was में आराम indeed से really messy. Could हराते have हैं gone हम south. उन्हें स्क्रिप्ट्स में आराम से Though trying to get some ball banks in, but he's not gonna find anything. Although he is kind of right about where भाई ये Entity विड्थ Gaming की is. ओपिंग कर रहा है So at भाई least he समझ seems रहा to है know their positions well. तू देख के At least बहना for जाएगा now. भाई Maybe क्या they सही should be able ओपिंग to कर get रहा the है ये rotations in towards the B bomb site, but that preemptive nade बोरकुम का स्प्रे doesn't do ट्रांसफर as much भाई damage as नहीं one would आता have भाई expected it to do. I guess Entity did get lucky a bit, but it क्या doesn't really मार रहा matter है because भाई Bren क्या Esports know खेल दिया exactly where ब्रेन they're भाई headed. प्रो एकदम प्रो Seems awesome like Bren have always been a step ahead throughout this entire game. Entity being on the receiving end of क्या होगा really इनका gruesome देखते tail. हैं boys Let's see if they come can back turn things let's around see here. See if they can put the tail on top of the head. They're trying to hit towards B, but the problem is there's still a bit of defensive utility, and this will boil the clock down to a very uncomfortable situation where Entity will start forcing out errors. Bren are perfectly positioned to capitalize on it. Orcum, pressing through, will be able to find one, and that's information relayed. That was Yeah, but at this point, Bren Esports have run out of all utility. They don't have any Molotovs, no smokes whatsoever. This is the perfect chance for Entity to strike. Let's all see Bren script have all what their happens, guns, but surprisingly, it seems that the guns are gonna be enough, as most of the rotations are already Shit. here. The Ops and the M4s shut Entity down. It's like a meat grinder whenever they walk out through those little corridors. And again, Entity boiling down the clock a little too low. Can't even blame them. Some of the utility holding them back. sad life boys sad And, life 2 rounds away, Bren. Looking to close things out a little early today. Entity Gaming on the other end. Still want to contest, and are they going to go for the force here is the question. Doesn't seem like so. They're going for the conventional deagle route.
Who digs up? Deathmaker surprised me on a P250. I'm feeling it today, perhaps. They're rushing towards B, maybe? I don't know. Entity Gaming, it seems like everywhere they go, they're just being read like a book and being shut like one as well. And there's barely any room that Bren are leaving for them to capitalize upon. And again, the aggression to recon doesn't work. It's at the side off at Ivy. Regardless where Entity go, it's just frags coming the other way with them having no say in the matter whatsoever. Bren Esports are having it their way. They're going wherever they want, whenever they want, using smokes to their advantage, getting one pick, falling the hell back, and retaining the numbers advantage. Excali, he could have been a little sneaky peeky over there, but Borkham, his reflexes are too fast to allow him to do anything. Quite arguably the strongest aimer in Entity Gaming now has no choice but to try and get a weapon in his hands maybe and somehow survive the round so that he can carry it forward going into the next one, which is gonna be the map point for Bren. How on earth does he survive this? That he choose to make this. Again, backs against the wall, the bomb far away from his grasp. Trying to go for a kill towards B, but he is gonna get killed in return. 3-2 points. There we go. Kill comes in. 15-6. Entity Gaming. 9 rounds is what they need to push this overtime and burn Bren. I don't know why I'm having a hard time pronouncing that. It's okay. I mean, Bren Esports have been getting way too much utility damage onto Entity Gaming. So I guess you can call them burned a little. Exactly. And Bren, gonna be comfortably taking the win here if they do secure this round. Mind you, Entity do have a buy. They have a say in what's gonna happen, but given what we've seen for the past few minutes, doesn't really seem like that say is gonna be all that hurt. Oh, he spots out a little pixel of Skills. He knows he's around the corner, trying to preemptively shoot. Luckily, it doesn't connect, but Skills will be forced back. That leaves Amaterasu all alone, and this is a problem. Amaterasu can get traded off easily right here, and WITZ does exactly that as he tries to cross over to the other side. Finally, a smoke comes in, but WITZ is in perfect position. He doesn't even need to worry about team mid now. He can safely attack in the entirety of shot ladder. And Entity Gaming get completely slaughtered at the edges of the bomb site A. Bren Esports go way too aggressive on that one. 16-6 पर बोला था मैंने एंटिटी अगेंस्ट अगर हार गए तो अभी कल का एंटिटी का गेम भाई मैं देख का टोला हो गया भाई बहुत मारा भाई स्टार्ट एंटिटी ने ऐसा किया था तो अच्छा लगा क्लच नहीं होता ना भाई तो अलग हाँ वो 1v4 तो जरा महंगा पे गड़ गया बहुत महंगा पड़ गया वो इसकी वजह से इकोनॉमी भी डाउन हो गई और मोरल भी एंटिटी लॉस्ट एलिमिनेशन था ना ये कि सेकंड नहीं और एक नहीं है ना और एक अब भी होगा उनका गेम अरे तुम लोग क्या बाद में डिस्कॉर्ड पे आओगे कितने बजे आओगे 8:30 बजे है ना अच्छा ठीक है फिर मैं जिम जाके आता हूँ 8:30 बजे क्या हम लोग खाती है हाँ तेरे को नहीं मालूम हम लोग चूज कर रहे हैं प्रपोजल्स में से उसके लिए वेलो यू लॉस्ट 100 हियर इज योर 40 अरे थैंक यू भाई बात 100 की नहीं रहे अच्छा खेल रहे थे स्टार्ट में थोड़ा होता है ब्रो हेलो हाँ अब इस मैप पे 100 तो गए कोई नहीं अब इनका नेक्स्ट कब है अभी कुछ आइडिया नहीं अभी तो बूट और डिमाइस का गेम है उसके बाद ही होगा शायद रुक मैं चेक करता हूँ इस टूर्नामेंट्स के डेट्स क्या क्या है अभी कल होएगा इनका गेम शायद कब से कब तक है टूर्नामेंट नवंबर 14 से 17 कल होएगा अभी बाकी का तो अभी विनर्स ब्रैकेट होएगा फिर जीजी बूट वर्सेस डिवाइस है ना अभी चलो कोई नहीं यार खेल तो अच्छा रहते शूटिंग वूटिंग अच्छा चालू है कल एक नया दिन है मारेंगे अपने लौंडे चिल 1v4 थोड़ा महंगा हो गया बाकी तो कुछ नहीं हाँ यार उसने अच्छा खेला ऑपर ने बीट्स कोई नहीं गाइस इट हैपेंस चिल गाइस चलो गाइस मेरी तबीयत बहुत डाउन है कल ही मिलते हैं ठीक है
Thank for being so awesome, guys. Thank you for waiting for. For no watching. Shit. Okay. So, for you guys watching, if you are new to the channel, please subscribe. I am a CSGO guy. Like tomorrow, I'll also stream the other 2 matches. क्या हुआ मैच का भाई? एंटिटी हार गई ब्रो ब्रेन से 16-6। बहुत ही शुरू में अपने लौंडे मस्त खेले, बाद में फिर उन्होंने बहुत मारा अपन को, बहुत मारा। विशाल इतना मारा ब्रो, तू देखेगा ना मैच तेरे को रोना आ जाएगा भाई, इतना मारा। 1v4 मारा भाई, 1v4 अपना एंटिटी हार गया। बहुत मारा भाई, अनशंट मारा भाई, बहुत ज्यादा मारा भाई, अनशंट बहुत ज्यादा घुमा घुमा के मारा है भाई। कोई बात नहीं, अभी एक चांस और है, जीतेंगे जीतेंगे, चिंता मत कर, जीतेंगे ब्रो। स्ट्रीम कहाँ हो रही है भाई? ट्विच पे हो रही है ब्रो, ट्विच। रुक जाओ, मैं तुम्हें लिंक दे देता हूँ। स्ट्रीम तो ओवर हो गई ब्रो, अब वो दूसरे टीम्स का मैच है, अपने एंटिटी का मैच तो हो गया। सो बाय द वे, जो भी गाइस नए हैं यार, प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। मैं भी CSGO प्लेयर हूँ, लाइक आई एम ट्राइंग टू प्ले CSGO लाइक प्रोफेशनली और समथिंग लाइक दैट, विशिंग टू। लेट्स सी। स्ट्रीम यहाँ हो रही है बॉयज, मैंने लिंक डाल दी। कितने आवर्स हो गए भाई तुम्हारे CS में? 1000 ब्रो, 1000 ब्रो, 1023। ओके भाई, कर दिया, गुड लक, थैंक यू ब्रो। लेट्स सी, एंटिटी के कितने मैच थे आज टोटल? आज एक ही था ब्रो, और वो एक ही हार गए अपन। अब एक कल है, और कल एलिमिनेशन वाला मैच है, मतलब कल अगर हार जाते हैं तो एलिमिनेट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे।
shit, man. Oh my god. क्या बोल रहा है? प्रो तो हो यार, तू नहीं है? अरे क्या कर रहा है उसने? अबे तू अपना पर्स चालू करना है। मैं किया GUYZ क्या कर रहा है? इग्नोर Five guys watching. Thank you for tuning in, guys. If you are new, just be friendly in chat, guys. Come on, chat. Easy. बताओ भाई कहाँ से हो तुम? सिल्वर गाइस, सिल्वर्स बुला रहे हैं यार. नहीं छोड़ूंगा तुझे. कैसा इन्फर्नो ब्रो भाई 5 मिनट देगा भाई. कहाँ जबरदस्ती इग्नोर भाई. इंटिटी आ गई यहाँ पे. एमएफ हो रहा है भाई. शिट शॉट. आज भाई के शॉट लग रहे हैं. भाई मुझे लगा हेडशॉट लगा. मिस आए ब्रो. इग्नोर कर रहा. पर हेडशॉट. क्या हक्कू आदमी भाई ये. अगर बेट वाले आजा. यार ये वाला नाइफ लेंगे. स्टेलेटो नहीं. अर्बन वो किधर है? क्या नाइफ है भाई. अरे यार नो सर. शॉट दिया भाई लड़के. तो रोको भाई. बंदे ने बी ऑफ करी है भाई. कब लिया नाइफ? नहीं लिया भाई. नाइफ नहीं लिया.
यार ये लग जाता है यार। स्प्रे हग रहा हूँ भाई मैं, क्या हो रहा है ये? नहीं यार। तेरी नहीं है तो बता डाल देता हूँ मैं, आज ही कर दूंगा। तेरी माँ को तो पता है, मैंने सुना। काय को लड़ रहे हो बे? चुप रहो ना, डीएम है। लड़ाई मैं तो लड़ाई भी नहीं करी भाई तू मत बोल भाई, म्यूट कर ले उसको। ऑपिंग भी करेंगे यार, तो ये ऑपिंग करते हैं। बहुत हाथ ठंडे पड़ रहे हैं मेरे। पीछे देख, प्लेस वाले पीछे पीछे देख। नीडेड यार, क्या बोलते हो बॉयज? खेल लूं इसके साथ? कब से मांग रहा है बंदा। चलो भाई चलते हैं भाई, खा जाएगा ये, जान खा लेगा पूरी। जान खा ली भाई, आधे घंटे से जान खा रहा है भाई। कॉम्पी में डायरेक्ट कर लेना भाई। रुक मैं तेरे को इनवाइट दे रहा हूँ। इसको बुलाया, कब से जान खा रहा है भाई। हेलो 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 हेलो। हाँ अरे आवाज आ रही है। बंदे बुला ले, आवाज का क्या करूंगा मैं? बंदे बुला। वॉकविट सिल्वर्स को बुला ब्रो, सिल्वर्स को बुला। वॉल्टेक्स एक सिल्वर को बुला रहे ब्रो। हेलो यार, ये बहुत पुराना है भाई, ये डस से मत मार यार। वॉकविट्स बंद, सिल्वर को बुला जल्दी। मैं सिल्वर दोस्त नहीं कोई। ऑप्टिमिस्ट नाइस ब्रो। कौन सा मैप खेलना है गाइस? जर्मन वो लगा दे। मिराज इनफी ट्रेन लगा। इनके तो अलग ही शौक है, मैं नहीं लगा रहा। ट्रेन ट्रेन की बात ही मत कर भाई। अभी अभी एंटिटी हार के आई है ट्रेन पे, बात मत करना ट्रेन की। और जिसका पर्पल कलर है ना भाई, प्लीज पर्पल। अरे यार मेरा दोस्त है एक, रुको। कौन निकल रहा है? लॉल। वाह भाई लॉल 6 वॉचिंग। ओ माय गॉड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस। आई एम योर होस्ट नाइस मैन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मी गाइस। सही में भाई 5 वॉचिंग आ रही है भाई, भाई साहब। यार ये क्या स्कैम है भाई। मैं देख रहा हूँ तभी 5 हो रहा भाई 5-6 वॉचिंग भाई जिंदगी में कभी नहीं आई भाई मेरे को, पता है सीएस खेलते वक्त। मैं भी बोला ना 6 वॉचिंग आए थे। लॉल एक दो रहते थे। एक दो भी भाई, वो भी मैं ही रहता हूँ भाई। विशाल सर विशाल कहाँ से भाई? विशाल एनीथिंग ब्रो।
फटाफट ले यार। अब भाई मैं क्या करूं भाई, अपनी तू बता भाई, मैं तेरे से बोल रहा हूं अपने सिल्वर फ्रेंड्स बुला, तेरे सिल्वर फ्रेंड्स ही नहीं है। मेरे सिल्वर फ्रेंड्स नहीं है यार, सब एलएम में। मुंबई, मैं ओके डी ब्रो, रैंक हो नाइस, आई गया। एम फ्रॉम भोपाल। सो डू यू प्ले CS:GO और व्हाट, लाइक विशाल? भाई मैं अपने सिल्वर फ्रेंड को बुलाता हूं भाई, मेरे सिल्वर फ्रेंड्स अच्छा खेलते हैं भाई। हाँ जैसे मैं। अरे टॉर्पीडो पूछ रहा है स्लॉट है, इसको इनवाइट करा तो भाई कब का। नो आई डोंट हैव अ पीसी, सैड ब्रो। बुला ले उसको, मैं तो ऐड कर रहा हूं। अब स्टॉर्म भी बुला रहा है भाई, मेरे साथ स्कैम हो रहा है भाई, कौन निकल रहा है? रुको, कोई जाना मत, मैं मजाक कर रहा हूँ। अकर वकर बमे वो कर ले जे। अभी मैं नई लॉबी बना रहा हूँ, मैं नई लॉबी बना रहा हूँ, मेरा दोस्त ज्वाइन नहीं कर पा रहा, ठीक है? ठीक। हाँ अच्छा इसको बुलाओ, इन्फर्नो को बुलाओ। स्टॉर्मी छोड़ के तो नहीं जाएगा ना ब्रो? हेलो, कोई जा रहा है क्या? नहीं तू छोड़ के तो नहीं जाएगा ना मैच बीच में? नहीं। ओके जी वेल प्लेड बॉयज, बहुत ही हागा अपन ने। धीरे धीरे चैनल ग्रो करेगा पर पक्का करेगा, लेट्स सी ब्रो। यार मुझे इस टूर्नामेंट में खेलना था भाई। फ्रीम है कि नहीं, ड्रीम है साला। गाइस ये मुझे खेलना है गाइस, लेकिन आई डोंट हैव अ टीम, शिट। SISTK दिल्ली ओपन क्वालिफायर्स ग्रीन हैक। Let's roll. टीम्स श्वेत नाम से कोई बंदा खेल रहा है क्या? एक सेकंड इनसे पूछ के आता हूँ भाई, इनकी टीम कौन सी है। एलिमेंट्स, DX, आई नेशन पता नहीं यार अब। वाइटैलिटी जूनियर, लॉल। Extreme 5 is a blast team, man. Blast team. Literally OP team. Extreme 5. Let's see this time what can GUYZ Academy do. यार ये आ ही नहीं रहा यार, ये नूब है भाई, सब नूब ही हैं। कब से वेट कर रहा हूँ, मैच चालू हो गया। नहीं रे गैम्बल किया। अरे गैम्बल भाई $5 का $70 हो गया, ऑलमोस्ट 100। लाइफ लेने वाला था ब्रो। कैसे मेरे को दो। अरे ऑटो पे कौन है?
डोनेट किया था। मत कर यार। ये जाएंगे भाई, ये जाएंगे। आराम से भाई, अभी मैच चालू तो होने दे। ये चलेगा, ये चलेगा। सूखा बिलात बीरश, कम ऑन। Fucking Russian. Let's go Russian. Let's go Russian. Okay. अबे ऑटो पिकअप कहाँ से ऑफ करूँ? अरे आजा भाई। ऑटो वेब 60 वो बंद भाई, वो कर लेना बंद, बीरश करना यार। चलो रुकना मत लो। हाँ चलो चलो वीडियो। अरे भाई सबको टैग मैंने दिया बाप। शॉट। डोंट रश मार्केट, वन एप्स वन मार्केट। हाँ शॉट प्लांट है। तेरा प्लांट है। सबको मैं ही तो मार रहा हूँ भाई। नहीं रे इसकी माँ का। अबे 2 सेकंड रुक जाता। हाँ हाँ। सॉरी यार, तू भी शॉट आता ना सॉर। इको रश। चल पीछे वापस। कौन है इको वाला? इको, अरे इको भैया प्लांट इको भाई, इको कर। देखो बोला भाई। वॉकर ग्रीन। रश मार दे वो। जीजी टीम है भाई, जीजी इसलिए नहीं खेल रहा था इसके साथ। एक मिनट आएगा, एक आया बबल देख। तो मारना ब्रो उसको। बोला मैं आया। वाह यार, मिड से भी आ गया। इको था तो रशियो नहीं किया भाई। इको था ना। 3 अलग है, 2 अलग। अबे यार, अरे मैं तुम लोग होल्ड करते तो मैं मार देता। कोई नहीं भाई, 3 लोग ही जाओ, मैं मिड जाता। 2 स्काउट क्यों भाई? क्या यार, क्या निकालो भाई राउंड निकालो। शॉट बी शॉट रश कर दो। मिड रश है। ओ पीछे आओ, ए चलो पीछे आओ, ए चलो। अबे फक, मैं शॉट है। भाई जूम पता नहीं कैसे पड़ा। नेस्ट है भाई, नेस्ट मार दे भाई। क्या गन? दूसरे वाले को फ्लैश में हेडशॉट पड़ा। तो समझ में आ रहा कैसे। ये मैं एंट्री ले रहा, मैं फ्लैश वगैरह मत डालना। C4 उठा लो भाई, C4 मैं नहीं रख रहा, ठीक है यार। सब स्नाइपर क्यों लेके भाई? मत दो भाई C4। बहुत स्मोक कर रहा हूं। मार दे भाई उसको यार। बी निकल नहीं होगा, रोटेशन हो गया। मैं भी निकल रहा हूँ। वेंट।
यार पीछे कौन देख रहा था? नहीं इधर से ऐप से आया। चल कोई नहीं। राइट साइड चेक करना ठीक है। मेरे वाले नीचे कोई शॉट प्लान ठीक है। रश मत करना, बी शॉट देख लो। ऐप्स देख पहले ऐप्स देख। तुम लोग ऐप्स देखो, मैं आएगा तब बताऊंगा। मैं देख रहा हूँ ऐप्स। ऐप्स ही आया यार। टाइमिंग फक। तेरा प्लांट है, हाइड कर। दोनों भाग जा भाई ये लड़का अच्छा खेल रहा है। प्लांट मेरा था, तारीफ करो मेरी। मेरा टाइमिंग का इशू है। हाँ क्या मेरे टीम के लिए 3 स्क्वाड हेड्स है। अबे इतने ऑफ मत करो यार, कितने यार इसलिए तो भाई नहीं किया मैं। क्या था भाई? भी चलो ना बॉल। वो आएगा तो जहाँ है हाइट है 35 राइट साइड गया वो। राइट साइड दो भी साइड ए जाओ। अबे दो सॉरी बेंच साइड टॉर्पीडो को बोल के माइक से कि थोड़े पैसे थोड़ा बोल के ले। साइड टॉर्पीडो को बोल के माइक के थोड़े पैसे वसूल ले, थोड़ा बोल ले। क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा भाई। कितना लेट है? क्या बोल रहा है? ये हगा था। लेट रिएक्शन था। मत इको करो यार। दो लोग 9000 रुपए किसके पास है? टॉर्पीडो डीगल ड्रॉप कर। एसएमजी ले ले। नहीं डीगल ड्रॉप कर। इको करो भैया बाय कर सकते हैं। कौन क्यों इको जबरदस्ती करा रहा है? तू कर ले भाई, तू जा ड्रॉप येलो ड्रॉप एक एसएमडी ड्रॉप कर ब्रो। एसएमडी सॉरी दो लोग को डीगल ड्रॉप कर। एक फक एक दे मेरे को एक दे। ठीक है तुम उसको बोल के कुछ बोला कर। एक शॉट होगा। अरे भाई वो 8th क्लास का बच्चा है भाई। शॉट होगा मिड से यार, ग्रीन मिड से। मैं गलत खेल लिया भाई इस बंदे के साथ। मैंने किया बोल रहा हूँ। रुक ग्रीन रुक जा, मैं पुश करता हूँ। पुश कर ना नेक्स्ट। -90 है वो। -90 मार दिया ब्रो। ए चलो एक बी शॉट पर ब्लू शॉट पे है भाई। नूब है भाई, इसको बोलो बी शॉट। तुम निकल जा मत, पिक लॉपर हो। क्या टीममेट्स मिलते हैं भाई। भाई मैं 6 किल पे हूँ फिर भी टॉप फ्राई करनी हूँ। प्लांट दे दे मेरे का। अरे मटका लगा रे उसका, नीचे था मैं, मटका लगा। ए मैन भाग जा। पिस्टल भी लगाऊंगा। ओके कितना टैग है भाई? वो कितना लो है बता ना। नीचे से आएगा, नीचे। मार उसको, मार मार मार।
ऑप आगे है, आगे आगे। अच्छा वो जो एक वाह बता तो ए ऑफ में को भाई तू मत चला ऑफ में को दे दे। कंप्लेंट तो दिखता है कितना टैग दिया उसे, एक से पड़ा था उसे। बुरा मान जाएगा। अबे किसी स्पॉन ही नहीं है उस तेरे स्पॉन पे लेते को आप दे स्मोक शॉट एक मत है भाई। एक ऑप एक गन नेक्स्ट एक प्लांट करो ना, बॉम्ब सीफोर लेके जाओ। सीफोर कौन उठाएगा? ए से मेरा यार लेने दे भाई उसको। बताओ कहां है? बी पे है ब्रो, बी जा उधर। हां वहां से बी जा। अबे मैं जानबूझ के नहीं मारा उसको। छोड़ना अबे तो मैं बेमरने का मर रहा ना थे भाई। मरने का थोड़ी है ब्रो, तू एंगल होल्ड कर, तेरे सामने आए तो मार दे वो। कोच हंट मत कर तू। मैं खड़ा। वाह भाई वाह, मजेदार। उसका ऐसे तो मारे भाई। हम किस के लिए नहीं खेलते भाई, प्रैक्टिकल खेलो। तो मरने के लिए नहीं बोला था। ये का लोकेशन बताओ बस, मैं जाता हूं तुम लोग पीछे। गैस तेरा बैक कनेक्टर आगे गया। बैक देखो बैक। एक और C4 उठा ले, इन्फर्नो C4 उठा। पीछे से एक लेकर के आएगा भाई मेरी, देखते रहे। वैन पर थे हाँ दो, एक मैंने 34। अंडरपास लैडर पीछे से आ गया। लास्ट है। आ रहा, मैं काटूंगा उसको भी शॉट है, शॉट आ गया। कौन लैडर? आने दे रे इसको, आने दे। सेव कर रहा है वो, सेव कर रहा है। टी स्पॉन दे अंदर बात है। 3 एचपी मरेगा यहाँ पे। छह किसी को ड्रॉप चाहिए? नहीं भाई। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी सेम टू यू भाई। लव यू भाई। यही बातें तो याद आएंगी। बैक flashback. दिया शॉट अच्छा सिटी है क्या प्लान कर नेक्स्ट भाई ऑफ पड़ी है वहाँ पे। जाना तो जंगल भाई यार तू ना हरामी हो यार। F1 कर दो भाई, बेचारा उसने टाइम आउट कॉल किया और C4 साला मैं उठा के परेशान हो गया भाई।
ये उनके लिए टाइम था क्या? नहीं भाई उसका लैग हो रहा होगा इसलिए चला गया वो। फिर 2 ऑफ 3 भाई मेरा सब्सक्राइबर वाला नोटिफिकेशन काम नहीं कर जी रहा भाई मेरे को आज तक आई सब कहनी है। सब ऑफ कर रहे हैं? नहीं 8 और वीडियो 2 भी ऑफ कर दो। मतलब प्लान बना लिया। बहुत गंदा हारेंगे अपन। डीगल देना कोई डीगल दो ना। पर डीगल ऊपर उछाल उछाल। दे दे। अच्छा ऊपर ही है वहाँ पे। अब पहले फुर्सत में निकल, कुछ नहीं मिलेगा। Let's go, let's go. I'm throwing smoke. T-spawn. येलो फक। एक ले लो कोई जाके। उप्स। किसका वेट कर रहा है भाई? ये मरेगा नहीं। ये ऑफ लेके निकल गया। बम ले और उसके पास जा ताकि उसकी ऑफ ना जाए, वो ऑफ ना दे किसी को। नहीं होगा, वहीं पे जाओ, आएंगे ढूंढने उसे वहीं पे। क्या बोरिंग है भाई ये। CSgo खेलने में भी मजा नहीं आता आजकल तो। I am planting the bomb. Counter-terrorists win. हेलो टॉर्पीडो। अरे सर बम है आपके पास। बच गया वो। भाई कभी तो ऑफ छोड़ के कुछ चला लो भाई। मेरे पास तो कुछ नहीं भाई। इसको मार देते हैं यार। मार दे हेडशॉट। डीगल है तेरे पास, जल्दी मरेगा। मारना। अरे ऑफ दे साले इसके ऊपर। ऑफ उठा ले। क्या साले क्या हो रहा है रे? मैं पिंग एकदम एक कनेक्टर एक लेटर मार्केट में सब मार्केट है। ये पब्लिक मार्केट है। शॉर्ट है भाई। क्या हो रहा है भाई? मेरा नेट ऑफ बंद है। बहुत मारे। फ्लैश टैग डैमेज गिवन 159। प्लांट है। साइड तो क्लियर कर ले। अब मैं प्लांट दियो पर्पल।
पापा ने अटका दिया यार तूने। मैं निकाल लूंगा। ऐप प्लांट है प्योर तेरा प्लांट। तू वहां से स्पैम करता है यार, मैं बताता जगह है, अच्छा प्लांट है ये। चलो अभी ये चलते हैं सब, होल्ड करना। ए चलते हैं। स्टेज को स्मोक कर दे। आता है जंगल कनेक्टर करता हूं, मेरे को दोस्त सब आता है। स्टेज कर दो स्मोक। मैं सीटी दे रहा हूं। मैं जंगल कनेक्टर करता हूं, एक रश दे। पैसे से प्रॉब्लम नहीं। होल्ड ऑन, होल्ड करो। स्मोक जा चुके ब्रो, रश करो चलो। I am planting the bomb. अरे काट काट। देखा तेरे को नाइफ दिला दिया, तुम लोग साले मतलब ही मुझे नाइफ नहीं दिलाते हो। मैं ले गया। अरे Terrorists win. और Throwing fire. ए टॉर्पेडो एक है। बी पिक करता मैं। ए जाओ तुम लोग, ए पे होल्ड करो। ठीक है मैं मिड जा। मेरे साथ कोई एक आओ। अरे ग्रीन जाना, ए जा। मिड नहीं। अबे पिक करना है बेबी हमको। कनेक्टेड है। अबे मिड साइड टाइगर। Flashbang. कोई नहीं, वो मिड वाले पूछ कर। प्लांट प्लांट कर दे। प्लांट तो लास्ट साइड है। लास्ट का साइड है मिड से 30 से का वही नहीं। कहाँ का प्लांट? एवेंट प्लांट है, आराम से दिखेगा, आराम से। तेरे को दिखेगा वो पेट आराम से। ब्लू को दिखेगा, ब्लू को दिखेगा। मैं तेरे को भी दिखेगा, स्टोर भी तेरे को भी दिखेगा। आप ले लो। कितनी अच्छी चल रही है ना, क्या बताऊं। ट्रेन की बन रही है। We will make them cry. I'm throwing smoke. ये कौन सा स्मोक है पापा? I'm throwing flashbang. अबे तो सामने से। Smoke. Throwing flashbang. Under the box. Throwing fire. गलत था। Flash क्यों? I'm throwing a grenade. Throwing flashbang. पर्पल रुक मैं बूस्ट करता हूँ। वेंटे देखना। देख एक पीछे से भी आया। वापस दे। क्या कर रहा है? देख एक आया है पास में, क्लोज है। आजा भाई। सब खेल पे जा रहा है तुम लोग। I'm throwing smoke. स्प्रे को क्या हो गया बॉयज? प्रैक्टिस नहीं की शायद। मदद नाइफ चाहिए मेरे को।
कोई वाली है GN3 का ब्रो सो गया था। एंटिटी का क्या हुआ ब्रो? यहाँ एसएम ब्रो, वेलकम मुस्लिम ब्रो। एंटिटी पहला मैच था एंटिटी का, हार गई 16-6। वाइट कितने मिनट की ब्रेन ई स्पोर्ट्स पता नहीं, $10 की थी कुछ। ली नहीं रे मैंने, $5 को गैम्बल किया। कैसे मेरे को भी करा दे भाई। कॉल तो दे ब्रो मरने के बाद। अरे यार पता नहीं कहाँ ट्रिपल था वो। 300 पिंग हो गई है। एक साइड पर है, बी पर। अरे अबे भाई तू बहुत ढीला है यार तू। अबे फुट से चाहे मैं उधर दोनों तरफ को प्लान तू सपोर्ट कोई बात नहीं। ए नहीं करता। मार्केट आएगा ना? अरे कहीं भी तू प्लान दे बस। शॉर्ट प्लान दे मैंने मरा। Let's be a good boy. गलत किया। अब जाइए मत। What the fuck? अच्छा टाइम तो वेस्ट हो गया। हो गया ना भाई, आखिरी राउंड था ना, क्या कर। उससे क्या फर्क पड़ता है? फ्लैश पैक हो जाता है। फ्लैश भी कर सकते हैं ऐसे बाकी गेम। मैं टाइम वेस्ट कर रहा था रे, मैं देख रहा था पहले। वो आया नहीं यूज करने किट होता तो हो जाता। क्या बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। किट था उसके पास। वो चूतिया है फिर। नहीं था मेरे को तो नहीं लगा। अबे उससे डिफ्यूज का ट्राई का किया बे। हाँ वो गया ही नहीं ना, वैसे चला जाता हो जाता। नहीं होता नहीं होता 3 सेकंड बाकी थे ऑलमोस्ट। P200 है किसी पास? नहीं याद है यार। GN3 कब हुआ बे तू? बे यार यूएसपी कौन? तू GNM था भाई, मैं डी रैंक हो गया। भाई मेरा तो अलग ही हुआ लेजेंडरी। अरे एनएम से भाई दोस्तों के साथ खेलते ना तो रैंक अप नहीं होता। Let's make this rain. अबे नहीं भाई तो ऐसे दोस्तों के साथ खेला ही मत कर। Decoys out. बीराशा लड़े होंगे। बम दिखा दे। नाइफ चाहिए। ए रोको ना, एक बंदा ए रोको। वाह भाई ये क्या हुआ? ये कौन? नहीं भाई रहना। जल I'm defusing the bomb. नेक्स्ट है। -48 है। डिफ्यूजर लास्ट भाई रहने दो भाई। हट भाई तू जा भाई। हट बे। इको अबे ऑरेंज था जब मैंने। चल साले मेरे पे मत। मैं था ए पर उल्टा मैं कॉल दिया कि साइड मत।
अब हमने रहने दो भाई, मैं नहीं खेल रहा भाई, रहने दो। मैं मारियो जाके खेल रहा हूँ भाई। जा Roger that. क्या तेरे को कितना बेट मार मार के खेलो ना तुम लोग साले। बेटर साले तू है। अरे बहन चोद संधिया। बी आओ। गन ले ले जाके जल्दी से। एक शॉट। गन ले ले जाके शॉटगन उधर। पीछे P250 पड़ी है ब्लू राइट लेफ्ट एक शॉट है और एक एम है। ए रुक, तू ए जाना यार। रहने दो भाई, मैं जा रहा हूँ, तू रुक, इधर ही रुक। एसएमजी शॉट मत जाओ स्काउट क्या यार, स्काउट साला हट। प्लांट P90 पड़ी है लेफ्ट साइड आगे। P90 पे ले ले। Holy fuck. Diffusing. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. P90 नीचे पड़ी है भाई, एक ड्रॉप करी मैंने इन्फर्नो, चाहिए हो तो उठा लेना, उधर पड़ी है। मैं दो लोग भी जाओ, मैं मिड कर रहा हूं। मैं भी जा रहा अकेले। अरे अकेले वो अकेले। Throwing fire. देखो Grenade out. भाई ये क्या क्या मोली है ये? रैंडम मारा। ए जाओ रैंडम मारा। कैसे गिर गया भाई? कोई नहीं रहा निकल और येलो निकल, मैं इसको देख लूंगा। ऑरेंज जा, पुश कर लेफ्ट में तेरे लेफ्ट। नाइस ऑपरेट। अरे प्रो ऊप लॉल भाई, कैसा है भाई ये? Let's go. मिड जान बहुत इजी गेम है यार। मॉली कर, एप्स मॉली कर। नहीं मत कर, मैं मारूंगा मत कर भाई। मैंने तेरे से बोला था। अंडरपास We have to on bro. Throwing fire. Flashbang. आजा भाई। बहुत बढ़िया लड़के। नाइफ करो मेरे को। मत कर, मार दे। Counter-terrorists win. हो रहा है भाई, आज एकदम मार ही नहीं पा रहा हूँ। क्या चाहिए किसी को? इमेज स्मोक करना है? नहीं, मैं खेल रहा हूँ ये। भी आना तो कोई कुछ करना मत, गाड़ तोड़ दूंगा। Come on, chop. नेट भले मार देना, लेकिन और कुछ नहीं। Incendiary out. Deploying flashbang. भी आया वो सर।
flashbang. आगे आगे अबे क्या Grenade out. मत जा आएंगे खुद है चाकू से जंप होगा वो Flashbang. आगे साइड मार वेट मारा गाली दो यार मैं नाइफ कर रहा था यार उसको यार शिट यार छूटिया भाग सॉरी भाई सॉरी भाई मैं बेटा हूँ सॉरी भाई सॉरी ड्रॉप दे अब इधर पीछे देख एयूजी दे एयूजी में संभाल लेना एयूजी देना अबे डीगल चलाना चुपचाप यार किस्मत खराब है यार कहाँ प्लांट दे रहा है नूबड़ा साला बेट मारा पूरा गेम भाई मैं नूबड़ा हूँ और गाड़ी ए में नहीं आया ए में नहीं कनेक्ट शीट Throwing flashbang. ऑफर 58 आ गया कनेक्टर यार एक नाइफ तो करना पड़ेगा कुछ भी हो भाई ओ भाई ये क्या था स्टॉर्मी भाई तेरे पास मॉली है क्या 98 गाइस एक नाइफ तो करूंगा यार मैं ना तो मेरे को गाली मत देना That's a negative. एक गाली खा थ्रो करना है मैं थ्रो कर देता हूं थ्रो भाई तू मत थ्रो कर यार प्लीज भाई Are we rushing in? मैं एक नाइफ तो करूंगा भाई Sneaky beaky like no. 4v1 में करना और क्या Throwing a grenade. बूस्ट दे मेरे को Throwing flashbang. बूस्ट देता 70 हां है मेरा Deploying flashbang. मैं 2 एचपी हूं भाई लॉल हो गया मेरा Flashbang. मैं निंजा करूंगा फिर तो पासिव खेलो भाई पासिव खेलो guys in the chat do you want to see a ninja diffuse एक कनेक्टर देखो अपन 8 ऑफ सब 8 Throwing smoke. भाई कैसे इसको हिट नहीं पड़ा यार स्मोक भी चला गया स्मोक है इधर पे स्मोक यप निंजा डिफ्यूज यार निंजा का निंजा हो गया यार फोर्टनाइट में निंजा हो गया मेरा करेंगे यार एक निंजा करेंगे एक निंजा करेंगे एक अबे नाइस मैंने यार थ्रो मत करना हां थ्रो मत कर तुम लोग मेरे बिना जीत नहीं पाओगे क्या भाई कोई गाली दो भाई देख मैंने थ्रो करना चालू किया तुमसे एक राउंड नहीं निकल रहा देख रहे हो पहले मर जाने के ब्लॉक कर रहा है तू और क्या येलो पर यार कनेक्टर भी आया फ्रेंड्स
भाई ए हो गया स्टोर। प्लांट यहाँ होगा, मारना उसको। क्या हो रहा है चलो बॉयज उनको जिता देते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसा क्या? ये पता है एटीट्यूड में ज्यादा चल रहा है, इसको अभी वोट ऑफ करो। अब मिड पिक मत ले जाओ कॉट में। चलो चलो ठीक है, अब ढंग से खेल लो। 2v 2 ए। हां 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 स्टॉर्मी मिड देखना, ठीक है। इन्फर्नो ए आ जा मेरे साथ, आ जा। मैं दिखता। हां ठीक है, चल छोड़ छोड़, सही खेलो सही खेलो। बी आओ रे, बी आओ, बी आओ। Laying down smoke. Throwing flashbang. भाई बी साउंड पहले से एक। अरे यार ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए जल्दी जाओ। ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। ब्लू कनेक्टर है। बात मान मेरी ब्रो। Deploying flashbang. Counter-terrorists win. सारे ऑफ। एक ऑफ मेरे को दो। तू मत खेल साले, तब भी खेल लेंगे, लेकिन तेरे को वोट ऑफ कर। What on? Going mid. Incendiary. ए आ रहे, ए आ रहे, ए आ रहे। Incendiary out. Flashbang. Grenade out. कनेक्टर आगे कौन Throwing देख रहा है smoke. भाई, कौन देख रहा है? मेरे निंजा का फिर सत्यानाश कर दिया तुमने। Grenade. एक और कनेक्टर है भाई। टॉर्पीडो गोली तो चलाओ, देख रहे हो उसे। Deploying flashbang. Throwing flashbang. आगे जा, आगे जा। प्लांट यही पे। Defusing the bomb. Terrorists win. तेरे को जाना नहीं था डिफ्यूज करने साले। स्मोक करके निंजा का कर। ओ वाओ, कितनी नई स्ट्रैट्स बता रहा है। ओ माय गॉड, टीम प्रो, ओ माय गॉड, इन्फर्नो। यार निंजा करना है यार, एक तो निंजा करने दो भगवान। निकल शॉट निकल। Smoke. Throwing flashbang. क्या फ्लैश डाला भाई। Deploying flashbang. मैंने कॉल है, मैंने कॉल। नाइस लड़को। मिड है, एक मिड है, हाई मिड। एक ऑफर अब लेके गया है मिड। देखना। एक मैंने खाई। पेमेंट ले। ए जा रहा है। दो, एक कनेक्टर एक साइड, साइड आ गया। एक कनेक्टर एक साइड, एक 90 टैग है, आराम से मारो उसको। लास्ट साइड। कौन सी साइड भाई? ए साइड स्टॉर्मी। तो भोसड़ी के बॉम्ब ड्रॉप है, कहां जाऊं? अच्छा ठीक है, अजीब बात है चोद। सॉरी भाई, सॉरी भाई, गलती हो गई भाई, मेरे को माफ कर दो भाई। मार्केट देखते रहे। तू मेरा ब्रो है ब्रो। मारेगा, ऐसे मारेगा। चुपचाप हाइड कर ले भाई, बी शॉट हाइड कर ले तू। हां अरे मार्केट से आएगा रे, इधर ही था वो साइड।
एमएन भी तो जा सकता है ना, क्रॉस नहीं हुआ, यही पे था। बोला मैं मत कर, कुछ मत कर, बैठे रह चुपचाप। भाई क्या हरकत है भाई, काय को फ्लैश फेंक रहा है। पीछे भागना, पीछे भाग, पीछे भागना। 20 सेकंड में नहीं होगा, पीछे भाग। मरा। अब भाग जा, भाग जा, भाग जा। मरा। अरे भागना चिट्टू। मरा। 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 बोला मैंने। अरे नुबड़े, नुबड़े। भाई ये बोलते कितना हो यार, गांड फाड़ दी मेरी। क्या नुबड़ा है यार। अरे तो चल तू बोल रहा है भाई, तेरे बोला समझ नहीं पीछे आ जा। लॉल भाई, कौन से राउंड्स थ्रो कर रहे हो भाई? भाई मैंने मारा तो नहीं, क्या बेट तो नहीं मारा किसी को? लॉल भाई, लॉल क्या यार क्या कर रहा है यार? इधर आ, इधर आ, बहुत नहीं। आता आता, इधर आ, इधर आ। नहीं तू इधर आ, तू इधर आ, मेरे को बता रहा तू। आजा भाई, ये नाइस भाई। कनेक्टर दे। एक और है कनेक्टर। शॉट। M4 ले। कनेक्टर डेड है ब्रो। कहाँ बोल रहा है? गो बी। बीजा। प्लांटिंग भी। अकेले मत जा, रुक जा। मार दो यार उसको, अकेला है वो। किट भी है। बेंच होगा या वैन होगा? वैन है। मैं रश करता। ऐप से। डिफ्यूज कर। स्टिक। इसको कर। स्टिक। यार 0.1। एंटी। ओ भाई अब मजाक नहीं, अब गेम जाएगा अगर अब बग चोरी हो। जाने देना ब्रो, फर्क क्या पड़ता है? चल पर ठीक है, ओके गुड। मैं पिक्सल खेल रहा हूं। क्या बंदे हैं भाई, बाय कर लेना ब्रो। चला मारते हैं अबे दो ऐसा मैंने पीक लिया था, दो कनेक्टर देके। दो आई मिड पिक मत लेना। हाँ एक एम है ना, बाकी दो हाई मिड है। मैं बी साइड खेल रहा हूँ। बी आएंगे। अभी भी है मैं। छोड़ उसको, पिक मत करो। एक और है मिड। मत करो, पीक मत करो उसको। प्रॉपर पीक मत लो, साइड होल्ड करो। मत दे पीक। अरे वाह। तो ए होल्ड कर, मैं भी होल्ड कर रहा हूँ। वाह हो गया। गया। एमएन प्लांट है। एमएन ऊपर। एक वही निंजा है, मार उसको, साइड है ब्रो, मार दे यार उसको। ये एंटिटी क्यों खेलता है? आप होल्ड करो। 3 लोग ए जाओ, 2 लोग बी जाओ। को स्पॉन्सर सब कुछ है, फिर भी इंटरनेशनल इवेंट में अपना मरवा के आते हैं, सिर्फ होम टीम को पेलता है। क्या करे भाई, तिपंजन दे, क्या कर सकते हैं भाई हम। होल्ड कर, हमारे हाथ में नहीं है भाई। 2 लोग भी आओ मेरे साथ। go ये फटे में आ गई। ए जाओ ए जाओ ना, 3 ए खेलो यार, मिड मत खेल, ब्लू मत खेल भाई, तू मर रहा है यार।
अबे मैं ही बोल रहा हूँ भाई, मैं ही बोल रहा हूँ। बी आओ बैकअप बी बैकअप। बी एंटर्ड। कनेक्टर देखते रहे। एक ही है। अंडरपास आएंगे पक्की बात। पर कनेक्टर देखते रहे फिर। भाई पहले टेट्रिस हॉपर है, टेट्रिस के नीचे हॉपर है। एक है भी। ए जाओ मैं होल्ड कर रहा हूँ भाई। ए जा रहे हो। ऊपर बैठे। मिर्शा तू कुछ कर ले, बाद में बोलियो। ग्रीन आएगा तेरे पास। मिड आ गया। जी गेम गया। तेरी टीम बना और कंपटीशन वैलिड पॉइंट्स हो गया मजाक। मस्ती में गेम चला गया। फर्क पड़ता है क्या रे? नहीं ना फिर चल। क्या एमएम ही तो खेल रहे हैं भाई। और क्या चलो ड्रॉ करते हैं। 3 ने खेलो, 2 भी खेलो। मिड पे मत जाना। मैं कनेक्टर खेल रहा हूँ, तुम दोनों साइड खेलो। एक ऑफर मैंने बोला मिड पिक मत लेना, जबरदस्ती स्काउट खरीद ली। मैं देख रहा हूँ ना। इसका कभी जिंदगी में नहीं खेलने वाला भाई। पीछे अरे आ जाओ। अरे एम 2 है, 2-3 है, बॉम्बर है। ए हो गया आ जाओ। लास्ट दोनों साइड है। वन प्लांटिंग। लास्ट सिटी भाई सब पता है भाई बंदे को। अरे मार दे उसको यार। अरे एक बार आ रहा है। हो जाएगा। नाइफ वाइफ मत कर देना भाई मेरे को। These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind you. Easy. सिल्वर एलिट। ठीक है भाई, खेल लेते हैं भाई, क्या फर्क पड़ता है। काम करते हैं, फेस सेट खेलते हैं। स्लॉट है क्या बॉयज? डिस्कॉर्ड कोई एनीवन वांट टू जॉइन फ्रॉम ऑडियंस? Noblesse. मैं उसे मार सकता हूँ इस टाइम, यही मेरे पास मौका है, लेकिन मैं उधर जाऊँ कैसे? 30 की वॉचिंग गिर रहे हैं भाई लौंडे। हमारी तो वॉचिंग आती ही नहीं है, आज पहली बार आ रही है। बाय द वे 2 भी नए गाइस हैं भाई। हाय एंड वेलकम टू द स्ट्रीम। एंटिटी हार गई यार, अच्छा नहीं लग रहा है यार। और किसका मैच चल रहा है? That's 14-7.
VG, this much closer to taking this map home. Bren, this much closer to exiting with a loss. And considering that the early game they did have, this paints a really contrasting image. कैसे हार सकती भाई एंटिटी? The buy does come in. A lot of creeps up on the board. No AKs, in fact. It's only Wits with the AWP. And again, this man has been so on point in the previous game. Might just carry forward into this one as well. GUYZ, taking no credit away from him, has been the catalyst for VG in this game. Setting themselves up pretty at 14 rounds as contributions. They can't go unanswered. Borkum. An aggressive off angle in through Ivy. The tag returns either way. The de-aggression should be there. The nature finish things off, and it does. Borkum gets the opener frag that Brent were looking for, and now they can split on towards the. But you're gonna send me the keyboard. Want to show them a picture of the keyboard? Yeah, sure. Show the picture. Show picture. Hey, check this out. Oh no. Fucking dude, why do people keep sending me Karambit slaughters that are not doing with platter? Yeah. Here's the keyboard he's gonna give me. I'm gonna be a real gamer. You can play that with your foot, follow. Literally. You just put your face on it and you press everything. Face roll? Yeah, literally face roll. Like, look, it's Q, W, E, like usual, and then it's R, like, to the side, and then it's G, and then it's T, what? And then it's M, H, N, like, what the fuck? And yeah, the Q is so small. I don't even know, dude. It's a scuffed ass keyboard, to be honest. Where QWERTY? Yeah, there's not QWERTY. It's just. Okay, boys. लगता है आज slot available नहीं है. इनके पास है क्या स्लॉट खेलने वाला हूँ बिकॉज कल फ्राइडे है एंड फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे दैट इज माय ऑफ. UJWR का वेलकम किया जाए बॉयज. कैसा ब्रो? नहीं वाह क्या बोल सकते हैं भाई, तू क्या बोलेगा एक बार देख 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 साउंड दिया क्या ये? अरे भाई साहब साउंड क्यों दिया ब्रो? इतना ज्यादा ट्राई हार्ड भाई, इतना ट्राई हार्ड. 30 किल मारे मैंने अकेले, 30 किल मारे ऐसे ट्राई भाई 6 राउंड से पूरे 11 राउंड. भाई बता तू मैं तेरा ट्राई क्या मारूं? 30 किल मारे मैंने, 50 किल मारूं. ये बॉय आजा भाई गेम. रुको फेस इट ओपन कर रहा हूं. द गेम आजा भाई. इसको मैं किक कर दिया मैंने सिट स्कैन को. क्या द गेम कौन है? सिट स्कैन. चलो भाई सी या बाय. कल का एंटिटी का मैच आई स्ट्रीम. कल क्वालिफायर्स तो खेल नहीं रहे तो सैड लाइफ. सी